आनंद तो जब अंदर से आपके एक आवाज आएगी, एक चिंतन आएगा, एक ध्यान में डूब सकेंगे, एक जीवन में तृप्ति मिल सकेगी। जब जीवन में एहसास होगा कि मैंने कुछ प्राप्त किया है, मुझे कुछ उपलब्ध हो रहा है, वह जो उपलब्ध होने की क्रिया है वो आनंद है। और मैं फिर ये पूछ रहा हूं कि अगर ये नहीं है तो फिर हमारे जीवन में, पशु के जीवन में कोई अंतर नहीं है। हम भले ये अहमन्यता कर लें, घमंड कर लें कि हम महान हैं, बड़े हैं, हम पड़ोसी से ऊंचे हैं, हमारा मकान बहुत ऊंचा है, हम ज्यादा सुंदर हैं, यह केवल घमंड है। और इस घमंड के माध्यम से तो जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता जो कुछ आप महसूस कर रहे हैं। हम भारतवर्ष में हैं और भारतवर्ष में एक बहुत महान शासक सिकंदर महान हो गया है, उसको महान कहते हैं। अकबर महान कहलाया, सिकंदर महान कहलाया, बाकी राजा लोग कहलाए, सम्राट कहलाए। महान 2-3 लोगों के बीच में लगा। और सिकंदर महान पूरा गजनी, पूरा रूस, पूरा यूनान, इन सबको लूटता हुआ और पूरे भारतवर्ष को लूटा। सैकड़ों हाथियों के औहदों पर उसने हीरे मोतियों से भरे हुए हाथी गजनी ले गया, अपने देश ले गया। सोने चांदी से भरे हुए 2000 हाथी भर करके सिक्कों से अपने गजनी ले गया। कम से कम 10,000 और तो यहां से उठा करके गजनी ले गया। इसलिए कि वो राजा था, इसलिए कि वो एक आक्रामक था, इसलिए कि यहां के राजा लोग उनका सामना नहीं कर सके, और इसलिए कि उसमें विजय होने की भावना थी, एक लूटने की भावना थी, एक छीनने की भावना थी, अपने आप को बहुत ज्यादा धनवान बनाने की इच्छा थी। जब उसकी मृत्यु निकट आई, जब उसको एहसास होने लगा कि अब मैं 4-6 घंटे में मर जाऊंगा और मेरी सांस रुकने लगी है, तो उसने अपने सैनिक को, उसने सेनापति को बुलाया, महामंत्री को बुलाया, उसने वैद्य को बुलाया। उसने कहा कि अब मेरी आयु कितनी बाकी है? वैद्य ने कहा महाराज अब आपकी नाड़ी टूटने लगी है, हो सकता है 3-4 घंटे और जीवित रहें, जो आया है उसको तो जाना ही पड़ेगा महाराज। उसने कहा कि उस सेनापति को कहा कि मैंने जो कुछ प्राप्त किया है उन हीरों का यहां ढेर लगा दो मेरे सामने, एक बार देख लेना चाहता हूं कि मैंने कितने हीरे एकत्र किए हैं, और उन सोने के सिक्कों का भी ढेर लगा दो, और मेरी जितनी रानियां हैं 10-12 हजार उन सबको यहां एकत्र करके खड़ी कर दो, मैं मरने से पहले उन सबको देख लेना चाहता हूं। हीरों का ढेर लगा दिया, एक तरफ सिक्कों का ढेर लगा दिया, माणिक मोती मूंगे उनका ढेर लगा दिया, 12-13 हजार रानियां थी उनका ढेर खड़े कर दिए, उधर उनके बेटे पोते पोतियां थी वो खड़ी हो गई, और सिकंदर लेटा हुआ अंतिम घड़ियां गिन रहा है। और हीरों के ढेर को देखे तो गर्दन से पीछे मुड़े, इतनी ऊंचाई, इतना ढेर, एक एक हीरा 2-2-2.5 लाख का, तो आप कल्पना करें कि उस ढेर का कितना अंत होगा उन धन का। उसने सेल्यूकस को, अपने महामंत्री को पूछा कि ये सब मेरा है? उन्होंने महाराज आपका है, आप ही तो लेके आए, भारतवर्ष को लूट के लाए हैं, रूस को लूट के लाए हैं, जितने देश थे उन सबको लूट के लाए, ये सब आपका है। और ये रानियां, ये सब आपकी महाराज, ये भी सब आपकी। तो उसने कहा मरने के बाद मेरा क्या होगा? उनका महाराज मरने के बाद कुछ नहीं होता है, एक बांस की 2 कपचियां लाते हैं, उनके ऊपर मूंज बांधते हैं, फिर आपको लिटा दिया जाएगा, और फिर 4 कंधों पर आपको लिटा करके और शमशान में ले जाकर जला देंगे। फिर ये सब किसी के साथ गए नहीं महाराज। तो एक काम करना, मेरी अंतिम इच्छा यही है, कोई वसीयतनामे में कुछ लिख के जाता है कि मेरे बेटे को ये दे देना है, मेरे पोतों को दे देना है, या ये। उसने कहा मेरे वसीयतनामे में और कुछ नहीं लिखना है, एक मैं जो कह रहा हूं वो काम करना है। तुम्हारा हुक्म दो, आप जो कहेंगे वही पूरा होगा, आप तो महान हैं, पूरे संसार में महान शब्द आपके पीछे ही लगा है। उनका अर्थी पे बांधते कैसे हैं आदमी को? उनके महाराज इसमें तो कोई लंबी छोटी बात नहीं है, आदमी को लिटा देते हैं, हाथ और पैर सीधे कर लेते हैं, और उसके ऊपर सफेद कपड़ा उड़ा देते हैं, कफन, और उसको मुंह से पूरा लपेट देते हैं कि उससे नीचे गिर नहीं जाए मार्ग में, और शमशान में चिता लकड़ियों पर रख करके जला देते हैं। बांधो तो दोनों हाथ नीचे लटका देना, बाकी शरीर को बांध देना कफन से, हाथ नीचे लटके रहने चाहिए। महाराज ऐसा तो आज तक नहीं हुआ, हाथ तो शरीर से चिपक करके फिर इसके ऊपर कफन लगाते हैं और फिर लगाते हैं। ये आप नई बात कह रहे हैं, ऐसा कैसे होगा? उसने कहा जो मैं कह रहा हूं वैसा करिए, मेरी आज्ञा, मेरी इच्छा तो ये है कि दोनों हाथ लटके हुए होने चाहिए। उनका महाराज को कारण तो होगा ऐसा, आप क्यों कह रहे हैं कि दोनों हाथ लटके हुए होने चाहिए अर्थी के बाहर? उसने ऐसा कि उन सब लोगों को और आने वाली पीढ़ियों को मालूम पड़ जाए कि इतना बड़ा सिकंदर महान भी खाली आ जा रहा है, ये मालूम होना चाहिए, बस इसलिए मेरे 2 हाथ लटके होने चाहिए। अगर सिकंदर महान भी खाली आ चला जाएगा तो गारंटी के साथ आप भी खाली आ चले जाएंगे, क्योंकि वो कुछ नहीं ले जा सका तो हम भी नहीं ले जा सकेंगे।
फिर साथ में ले जाएंगे क्या? जब कुछ नहीं ले जाएंगे तो ये सब शास्त्र झूठे हैं, फिर बेकार है, सब बेकार ही है। ये धर्म अगर बेकार है तो फिर हमारे पास ले जाने के लिए चीज क्या है? क्या ले जाएं, कैसे ले जाएं? न पत्नी साथ जा सकेगी, न पत्नी पुत्र जा सकेगा, न भाई बंधु बांधव कुछ नहीं जा सकेगा, तो फिर साथ में कौन जाएगा? या अकेले ही यात्रा करनी है तो फिर ये तामझाम क्यों करें हम? क्यों इतने आयतोबा करें? 4 लाख को 5 लाख क्यों बनाए हम? जीवन यापन के लिए तो बहुत जरूरी है। अगर सपूत बेटा होगा तो और कमा करके जिंदगी व्यतीत कर लेगा, और कपूत बेटा होगा तो 5 लाख आप ही उड़ा देगा, फिर भी फकीर हो जाएगा। आप उसमें क्या करेंगे? कपूत बेटा तो 1 साल में नहीं उड़ा देगा, दूसरे साल खाली हाथ हो जाएगा। और सपूत बेटा होगा तुम्हारे पैसे उसको जरूरत है नहीं, वो खुद 5 लाख इकट्ठे कर लेगा। और सिकंदर महान अगर कह रहा है तो सिकंदर महान ने एक ही बात कही, आप यूनान का इतिहास पढ़े, उसने कहा कि मैंने जीवन में सब कुछ प्राप्त किया है, रास्ता बता सके जिस रास्ते पर चल करके मैं प्रभु में लीन हो सकता है, उस आनंद को प्राप्त कर सकता जो आनंद आम आदमी प्राप्त नहीं कर सकता। जो आम आदमी जिस पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते, वो पूर्णता अगर मैं प्राप्त कर सकता तो आज मैं बहुत प्रसन्नता के साथ जाता है। आज मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट होती, आज मेरे होठों पर हंसी होती, आज मेरे आंखों में आंसू हैं, आज मेरे हृदय में पश्चाताप है कि ये मैंने एकत्र किया, एकत्र करना चाहिए था, वो नहीं कर पाया। और सिकंदर तो चला गया, मगर एक इतिहास लिख के चला गया, एक विचार लिख के चला गया कि हमें जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के लिए भजन गाने से और मंदिर में जाने से और हाथ जोड़ने से और आंखें बंद करके बैठने से पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। यह केवल ढोंग है, यह केवल पाखंड है। हम अपने आप को समझाने की एक प्रक्रिया है कि हम मंदिर में गए, मंदिर में जाए, आपको मानस में वो घूम रहा है कि उनसे 400 रुपए वापिस वसूल करने हैं, तो इधर से होते हुए निकल जाऊं, 400 रुपए ले लूं, आपको मैंने वो घूम रहा है। और आप मंदिर में भगवान के सामने खड़े कि उसको सद्बुद्धि आ जाए, साल भर से दिए नहीं, 4000 रुपए मेरे फंसे हैं महाराज, एक ईश्वर मेरे 400 रुपए दिलवा देना, तो ठीक है मैं इधर से निकल जाता हूं, मैं कल आपको जरूर 5 रुपए का भोग लगा दूंगा। अब 4000 रुपए लेने के लिए 5 रुपए का तो आप सोचा इसमें नुकसान है, फंसे हुए रुपए तो ही, और 5 रुपए अगर देने से काम निकल जाता हो तो हमें क्या तकलीफ है? अब आप खुद सोच लीजिए कि मंदिर में जाने की प्रक्रिया आपकी क्या है। मैं आप में से अधिकतर लोगों की चिंतन की डूबने की प्रक्रिया नहीं है, और ये बात सब लोग कहते हैं, मगर कैसे डूबे हम अपने आप में, आनंद मग्न कैसे हों, किस तरीके से पूर्णता तक पहुंचे, तरीका कौन सा, ये किसने नहीं बताया। ये सब ऊपरी ऊपरी बातचीत तो आपको सबको कही, मैं भी कहकर चला जाऊंगा, अभी 1 घंटा हो जाएगा, प्रश्न करके चला जाऊंगा, आप कहेंगे गुरुजी बहुत अच्छे बोले, और मैं कहूंगा चलो मैं भी बोल के आ गया, मगर उस रास्ते को नहीं बताएंगे जिस रास्ते पर चल करके हम पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके पास उस अंधेरे में टटोलने के अलावा कुछ नहीं रहेगा जो मैं आपको अंधेरा दे रहा हूं। मैं भी आपको अंधेरा ही दे रहा हूं, जो बाकी साधु संन्यासी ने आपको दिया कि बस जाओ मंदिर में दर्शन कर लो, रामलीला के दर्शन करके उस मस्जिद को गिरा दो और तुम मंदिर में खड़े हो जाओ, बस रामलीला तुम्हारे पास आ जाएंगे। ऐसे तो रामलीला नहीं आ सकती, ऐसे प्रभु आपके पास नहीं आ सकते, न आप प्रभु के पास पहुंच सकते हैं। तुम्हारे बीच में गैप है, मेरे और तुम्हारे बीच में एक ही कड़ी है, मैं इसको बंद कर दूं तो मैं आप तक नहीं पहुंच सकता। ये बीच का मीडियम नहीं है, और मीडियम आपको बीच का माध्यम कोई आधार नहीं बताएगा, तब तक आप प्रभु के पास पहुंचेंगे नहीं तो पूर्णता नहीं मिल सकती। ये मीडियम, ये माध्यम, इसको कहते हैं साधना। साधना का मतलब है शरीरम साधयति स्वधर्म, जो शरीर को साधता है वह साधना है, शरीर को कंट्रोल करता है, शरीर को नियंत्रित करता है। Joy is something you shall feel flowing from within. A voice will be heard. A thought shall pervade your mind. You shall go into deep trance and you shall attain a fulfillment in your life. Then you shall realize that you have acquired something, and the process of this achievement is true joy. I ask you, if this is not so, then what is the difference between our lives and that of animals? We may feel vain that we have so many worldly possessions, that we are more well off than others, that we are more beautiful, but all this is false pride, and we shall gain nothing from this arrogance. We are living in India where once Alexander the Great came. Why was he called great? Akbar the Great, Alexander the Great. The rest were called just kings or at the most emperors. Great is used with the name of only 2 or 3 people. Alexander the Great conquered several small and big kingdoms and returned with 2000 elephants laden with gold and silver in loot. He abducted at least 10,000 women and took them away with him. This was because he was a great warrior and a good general, and the other kings
could not withstand his attack. This was because he had in him a desire to win, to loot, to become rich. When he was lying on his deathbed, when he realized that death was near, he called his commander and the physician. He asked the physician how much more he would live. The physician replied that his pulse had become weak and that perhaps he would live for another 3-4 hours. Whoever is born has to die one day, said the physician. Alexander said to the commander, I wish to see whatever I have won in my campaigns. Bring it all here. A huge mound of precious stones, diamonds, sapphires was made on one side, and on the other a huge pile of gold coins was laid. 12,000-13,000 women stood around the bed where Alexander lay. He looked at all the wealth he had amassed. It was immense, and its value could not be calculated. He said to his commander, This all is mine. The commander replied, Yes, your highness, all this belongs to you. You have won it by conquering so many kingdoms, and these women, they too belong to you. Alexander said, After my death, what shall I gain from them? After death, your highness, nothing is left. Your body shall be tied on a bed made of bamboos, and it shall be taken to the cremation grounds where your body shall be cremated. Then what shall happen to all this? Your highness, all this shall remain behind. No one can take wealth away with oneself. Then do one thing and consider it my final wish. Before death, people prepare their wills and leave their wealth for their sons and grandsons. I don't want any will. Just do as I say. Your highness, please command us. Whatever you order shall be obeyed. You are great, and in the whole world, this word has been used only with your name. How do they tie a dead body? Asked Alexander. The commander replied, Your highness, it is a very simple process. The body is laid straight on a bed of bamboos. Then a white sheet is covered onto the body, and then it is set on a pyre and cremated. Alexander said, When you tie my body, let the hands remain hanging on both sides of the body. Cover the body with a cloth, but let my hands remain uncovered, hanging on the sides. But your highness, such a thing has never happened before. The hands are placed along the sides, and then the whole body is covered with a cloth. This is completely a new way which you are suggesting. How can we do this? Alexander said, Do as I say. This is my command and my wish, that my hands should remain hanging. Your highness, there must be some reason that you wish your hands to be left hanging. At this, Alexander replied, I want my hands to remain thus so that all people and the coming generations can know that even Alexander the Great went from this world empty-handed. When Alexander the Great left this world empty-handed, then you too shall surely live the same way. When he could not take away anything, even you cannot take away anything. And if this is so, then all these amenities are false and useless. Then what do we have which we can take with us? How can we take away anything? Neither the wife, nor the children, neither the brothers, nor the friends. None shall accompany us. Then who shall be with us? When we have to depart all alone, then why and for what should we clamor so much? Then why is there so much confusion and struggle? Why should we have to earn so much money? If your son turns out to be capable, he will earn and make a living, and if he turns out to be incompetent, then you may leave enormous wealth. He will waste it all away. What can you do? If you have an unfit son, he will spend even 5 lakh rupees in just 7 days, and then he will have no money. And if you have a good son,
He won't need your money and will himself earn more than 5 lakh rupees. On reading the history of Greece, one comes to know that Alexander had said, I have achieved everything in my life except for true joy. Instead of all this, if I had been able to devote myself towards God, then I could have achieved true happiness, which a common man cannot achieve easily. If I had attained the totality of life, which is not possible for a common man, then I would have died with joy and happiness on my face. A smile would have been on my face, but today there are only tears in my eyes. Today I feel sorry to have acquired these useless stones and for not having accomplished what I should have. Alexander died, but he left a valuable thought inscribed in the pages of history that we should strive to achieve the totality of life. One cannot achieve it by singing hymns, by visiting a temple, by folding hands, or by closing our eyes. All this is nothing but hypocrisy and deceiving ourselves. You go to a temple and all the while you keep thinking that you have to recover 4,000 rupees from some person. You stand in front of the idol of God and pray, O God, please bestow that person with good sense. He has not returned the 4,000 rupees I loaned him 1 year ago. O God, please make him return my money. I will surely come again tomorrow and offer 5 rupees in your feet. You think that to get back 4,000 rupees, you have to offer only 5 rupees. So what is the loss? Just think, is this the mentality with which you visit a temple? I am talking about the sort of mentality possessed by most of the people. This is not the way to fuse with the divine. Everyone seems to preach, but no one preaches the way to this goal or how to achieve divine bliss or which is the method of attaining totality in life. No one has revealed this to you. Everyone preaches, but no one tells how to put it in actual practice. I will also finish speaking in 1 hour and will go away. You will also say how well Guruji has spoken, but you will not know the way through which totality can be attained. You will not have any guiding light to the dark path which I have mentioned to you. I will again be showing a dark path to you if I say that you should go to the temple, pray before the idol of Ram and demolish the mosque near it. You will go to the temple thinking that Ram would appear before you. This is no way to realize God. This way, God will not appear before you and neither can you reach Him. And until you do realize His form, you shall not achieve totality in your lives. The only way to it is sadhana. Sadhana means shariram sadhayati sadharma. That is, controlling all senses in the body is sadhana. Controlling one's senses, one's thoughts, one's body is sadhana.